Hello everyone, good afternoon. गुड आफ्टरनून सर। क्या चल रहा है भाई? कैसे हो सब लोग? बहुत ही बढ़िया सर। बहुत ही बढ़िया हो। बढ़िया बढ़िया। यस सर। कहाँ से हो भाई आप? शुभांग? उड़ीसा से। उड़ीसा के बाजू से ही हो? कोई डाउट किसी को इन प्रीवियस टॉपिक गाइस? एनीवन हैज एनी काइंड ऑफ डाउट इन प्रीवियस टॉपिक? अजाइल पढ़े? कोई दिक्कत आई? सबको प्रोसेस समझ में आ गया सही से? एवरीवन गॉट द प्रोसेस? सर हाँ अजाइल इतना हाँ ही हाँ। था क्या? हाँ भाई, इतना ही था। अजाइल इतना ही काम आता है अगर जाओगे इंडस्ट्री में। तो दिस इज हाउ मच यू हैव टू नो इन ऑर्डर टू सस्टेन। ठीक है। ऐसे अजाइल देखोगे तो अजाइल में बहुत सारी चीज आती है। अजाइल में स्प्रिंट ऑफ स्प्रिंट आती है, अजाइल के अंदर भी बहुत सारी चीजें आती है। बट इफ यू इफ यू हैव टू वर्क नो, तो उसके लिए इतना ही काफी है। ये जो आप इंटरव्यू में भी बोलोगे उसमें भी इतना ही बोलोगे अजाइल। उससे ज्यादा सर ये बोल तो भी। बहुत हाँ, इजी था अजय। यही नहीं समझ में आता है बट लोगों को। देखो, अगर तुम ऐसे लोग अब इंडस्ट्री में जाओगे ना, कई लोगों को, ऐसे लोगों को भी देखोगे जो ना 5-5 साल के एक्सपीरियंस पे है और काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, लेकिन ना वो अजाइल पे ही काम कर रहे हैं, लेकिन ना उन लोगों को पूरा एंड टू एंड प्रोसेस पता ही नहीं है। ये तुम लोगों को इजी क्यों लग रहा है? क्योंकि तुम टेक्स्ट बुक वे में पढ़ रहे हो ये। ठीक है। तुम्हारे पास ये अभी स्टूडेंट लाइफ का एक्सपीरियंस है, तो तुम लोग को थ्योरेटिकल चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। बट लोगों को नहीं आता इतने जल्दी से प्रोसेस बेस्ड थिंग समझ में। तो लोग काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनको अजाइल बहुत हार्ड लगता है। एंड इट्स ऑल्सो लाइक कि क्योंकि बहुत सारी प्रोसेस है इसमें, इट्स ऑल्सो लाइक कि कई लोगों को चीजें समझ में आती है, याद याद रहती है थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद भूल जाते हैं। तो और कई लोगों को समझ में ही नहीं आती है प्रोसेस बेस्ड। तो ये हो सकता है तुमको इजी लग रहा हो सकता है क्लास में और कई लोग हो जिन लोगों को हार्ड लग रहा हो, या फिर बहुत बल्कि लग रहा हो, वास्ट लग रहा हो, बड़ा चैप्टर लग रहा हो। तो ऐसा भी होता है। बट मैंने कई लोगों को देखा है वो अजाइल में ही काम कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि उनका कोई स्क्रम मास्टर है, उसका जॉब रोल क्या है, या फिर इंटर स्क्वाड में दूसरा स्क्वाड है, उसका जॉब रोल क्या है। तो ऐसी स्क्रम ऑफ स्क्रम मीटिंग भी होती है। देखो, जैसे मैंने बताया तुमको कि मल्टीपल स्क्रम टीम रहती है ना, तो ऐसी स्क्रम ऑफ स्क्रम मीटिंग होती है जहां पर पूरी स्क्रम टीम्स के हेड, टेस्टिंग लीड, मैनेज योर बोर्ड डेवलपमेंट लीड, टेस्टिंग लीड और स्क्रम मास्टर, ये सारे लोग ना बैठ के डिस्कस करते हैं कि उनके टीम का प्रोग्रेस कैसा है। इसको स्क्रम ऑफ स्क्रम मीटिंग बोलते हैं। ऐसे ही इंटर स्क्वाड लीड होते हैं। इंटर स्क्वाड लीड मतलब जो हर स्क्वाड के लीड होते हैं, हर स्क्वाड को मैनेज करने का काम ही होता है उसका, कि कोई फैसिलिटेशन देना हो किसी टीम को, हर पर्टिकुलर स्क्रम टीम को, तो वो लोग करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो हम लोगों ने थ्योरेटिकली कवर नहीं की, बट वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। वो तुम काम करते करते तुम सुनोगे तो ही समझ में आ जाएगा कि क्या है। ठीक है। बट तुमको जितना जॉब करने के लिए और इंटरव्यू निकालने के लिए जरूरत था, इतना ही था, इतना ही पढ़ना है। ठीक है। अभी ज्यादा इधर उधर हाथ पैर मारोगे तो हो सकता है बेसिक ही ज्यादा अच्छे से क्लियर ना हो और एडवांस भी समझ में ना आए। ठीक है। यस सर। नहीं तो और कोई डाउट होगा तो पूछना। आई विल रिस्पॉन्ड। मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना, जब भी मेरे पास टाइम रहेगा मैं रिस्पॉन्ड करूँगा। ठीक है। एडवांस भी अगर रिसर्च करते हो जाए कि क्या है क्या नहीं है तो। ठीक है। कूल। और कोई क्वेश्चन और कोई डाउट? एनी डाउट्स अपार्ट फ्रॉम दिस previous topic, any topic which we have gone through? No? Okay. तो आज हम लोग पढ़ेंगे STLC और टेस्ट प्लान। टेस्ट प्लान पूरा थ्योरी है, बहुत बोरिंग है। बट STLC थोड़ा सा प्रोसेस बेस्ड है, और ये तुमको आधे से ज्यादा आता भी है। ठीक है। सो STLC स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल थी, वैसे एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल है। तो डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में मॉडल्स थे बहुत सारे, बट टेस्टिंग लाइफ साइकिल में सिर्फ एक
पर्टिकुलर मॉडल है, मॉडल भी नहीं बोलना चाहिए, जो स्टेजेस टेस्टिंग लाइफ साइकिल के अंदर आती है यही है, इसके कोई डेविएटेड मॉडल्स नहीं है, कुछ ट्वीक करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये एट दी वेरी अर्लीस्ट स्टेट में डेवलप्ड नहीं था, और इसमें ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट भी नहीं आती है जिसकी वजह से ये स्टेट्स को ट्वीक करके एक नया पर्टिकुलर मॉडल बनाया जाए। तो throughout anywhere in the world, if you go and if you talk about STLC, most of the people will say these are the 7 stages of STLC, 7 to 8 stages of STLC, ठीक है। और what is STLC? It's a step by step process to test the application basically। ये तुमको ये बताता है कि if you want to test an application, what are the procedures you need to follow, what are the stages you need to follow in order to completely test a beautiful application, okay। सो सबसे पहले होता है सिस्टम स्टडी। सिस्टम स्टडी तुम्हारा कुछ नहीं होता है, द सेम थिंग विच वी यूज्ड टू कॉल रिक्वायरमेंट स्टडी, राइट। So system studying basically here we read the requirement, understand the requirement. If we have any queries or doubt, we contact our business analyst, developer, product owner or testing lead basically। So अगर तुम requirement basically requirement understand करते हो, तो अगर तुमको रिक्वायरमेंट पे कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी कंसर्न होता है, तो बेसिकली तुम क्या करते हो, बेसिकली इन लोगों से कांटेक्ट करते हो, इनसे डाउट्स क्लियर करने का ट्राई करते हो, बिकॉज वही रिक्वायरमेंट के बेसिस पे तुम टेस्ट केस लिखने वाले होते हो। तो अगर कोई भी कंसर्न होता है तो वो पहले ही सिनेरियो डेरिवेशन से तुम पहले ही क्या कर लेते हो, क्लियरिफाई कर लेते हो। दूसरा आता है टेस्ट प्लान प्रिपरेशन। टेस्ट प्लान प्रिपरेशन होता है बेसिकली यहाँ पर तुम जो भी फ्यूचर टेस्टिंग एक्टिविटी होती है, हो सकती है तुम्हारी, रिस्पेक्ट टू एनीथिंग, जो भी फ्यूचर टेस्टिंग एक्टिविटी होती है, वो सारी चीजों का प्लान करते हो। इसमें क्या क्या कर सकते हो, बेसिकली कुछ भी प्लान कर सकते हो टेस्ट प्लान के अंदर, तुमको लगे जो भी, बट मेजरली तुम ये सारी चीजें प्लान करते हो। हाउ मेनी इंजीनियर विल बी नीडेड, व्हाट इंजीनियर शुड बी like who engineer what engineer should be involved in which particular stage। अभी जैसे जैसे मैनुअल टेस्टिंग का स्टेज चल रहा है, तो कौन कितने इंजीनियर यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे और कितने ऑटोमेशन में इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। ऑटोमेशन का अप्रोच क्या होगा, what are the types of testing we have to do, what are the types of testing we don't have to do, what should be our testing approach, when should our testing start, when should our testing end, or what is the amount of effort we have to spend on each state or each testing phase, ठीक है। और डिफेक्ट अगर निकलता है तो डिफेक्ट ट्रैकिंग का प्रोसेस क्या होगा, ऑटोमेशन करना है तो ऑटोमेशन का प्रोसेस क्या होगा, हर चीज तुम बेसिकली प्लान करके डॉक्यूमेंट करते हो इस टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट में। टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट का सेपरेट टॉपिक है, तो हम लोग उसको अच्छे से पढ़ेंगे, विल गो थ्रू इट, विल स्टडी इन डेप्थ दिस होल टेस्ट प्लान, ओके। बट उसके बाद का स्टेट आता है तुम्हारा टेस्ट केस राइटिंग। राइटिंग ऑफ टेस्ट केस इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ थिंग, आइडेंटिफाइंग द पॉसिबल सिनेरियो, write the test case, review the test case, fixing of the review comment, verify the review comment, test case approval, and then storing it in a repository. Now what is a repository, why we have to store it in a repository? Basic idea is that, for an example, तुमने एक टेस्ट केस लिखा, I और I have written a test case, ठीक है, मैंने एक टेस्ट केस लिखा, वो मेरी मशीन पे ही है, मेरे लैपटॉप पे ही है। if I suddenly if I have to go on emergency leave or something like that, कि हाँ अर्जेंट है, मेरे को लीव पे जाना पड़ रहा है, तो if someone has to execute that test case and test some feature, he is blocked, right? Why? Because I am having that particular test case in my machine. He can't access my machine, right? Obviously. So how can that particular person access the test case which is there in my machine? So what I will do, after just the approval of the test case, I will store it in a dedicated place where it will be accessible to everyone. ये क्यू टेस्ट वगैरह में अगर तुम टेस्ट केस लिख रहे हो या जीरा में लिख रहे हो, तो इट विल बी देयर फॉर एवरीवन फॉर श्योर, ठीक है। बट अगर तुम एक्सेल में लिख रहे हो, कई प्रोजेक्ट्स में ऐसे भी करते हैं, यू हैव टू राइट योर टेस्ट केस इन एक्सेल, तब तुमको एक ऐसा डेडिकेटेड प्लेस चाहिए रहेगा जहां पर तुम अपने टेस्ट केस को अपलोड करो, ताकि सब लोगों को वो एक्सेसिबल हो, ठीक है, सब लोगों से वो एक्सेसिबल हो, ठीक है। सो बेसिकली इसको ऐसा एज्यूम कर सकते हो जैसे गूगल ड्राइव में तुमने कोई डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया एंड देन यू आर गिविंग access to everyone, right? So now if even though you are not there, and if someone needs that document, he can just go to the Google Drive and try to fetch the document, okay? Are we clear?
कूल। अब देखो तुम्हारे टेस्ट केस, जैसे ही तुम टेस्ट केस लिखना खत्म करते हो, you have to create a traceability matrix. In previous classes we have gone through this traceability matrix thing. If you remember, what is traceability matrix? It's a document which makes sure that each and every requirement has got at least one test case. देखो टेस्ट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स एक चेकलिस्ट के जैसी होती है। तुम एक कॉलम बनाते हो रिक्वायरमेंट का, उसके साथ एक और कॉलम बनाते हो टेस्ट केस का। सो जैसे ही तुम एक रिक्वायरमेंट के लिए टेस्ट केस लिखते हो, यू हैव टू मैप योर टेस्ट केस अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट। इससे क्या होता है, व्हेनेवर यू आर डन विद राइटिंग ऑफ द टेस्ट केस, यू कैन जस्ट विजिट दिस डॉक्यूमेंट एंड मेक श्योर कि हर रिक्वायरमेंट के लिए एटलीस्ट एक टेस्ट केस तुमने लिखा हुआ है। ओके इसको हम लोग रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, आरटीएम बोलते हैं बेसिकली, और क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, सीआरएम भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली सिनोनिम है। यू हैव टू मेक श्योर कि तुमको ये सारी चीजें पता हो, क्योंकि इंटरव्यूअर कैसे भी पूछ सकता है। ठीक है, व्हाट इज, वो लोग ना यूजुअली ऐसे टर्म यूज करते हैं जो इतना फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होता, जस्ट टू चेक योर नॉलेज। आई डोंट नो व्हाई दे यूज टू डू इट, बिकॉज तुम डेफिनेशन तो सेम ही बोल रहे हो दोनों, so what is the purpose of confusing the candidate? But they used to do. Okay, then comes after। देखो ये एकदम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। अगर तुम देखोगे ना कि इसके जब तक तुम ये प्रीवियस पर्टिकुलर स्टेज को कंप्लीट नहीं करोगे, तुम दूसरे स्टेज में नहीं जा सकते। जब तक तुम टेस्ट केस नहीं लिखोगे, टेस्ट केस को मैप नहीं कर सकते रिक्वायरमेंट पे। जब तक तुम्हारे पास ये मेक श्योर नहीं हो जाएगा कि हर एक रिक्वायरमेंट के लिए टेस्ट केस लिख लिया है, तुम एग्जीक्यूशन पे नहीं जा सकते। एग्जीक्यूशन पे नहीं जा सकते, एग्जीक्यूशन नहीं करोगे तो डिफेक्ट ट्रैकिंग पे नहीं जा सकते। तो ये एकदम लाइक बैलेंस्ड और एग्जामिन्ड है पूरा, कि ये ऐसा ही होना चाहिए। काफी नपातुला है ये प्रोसेस, एंड इसलिए इसमें ज्यादा चेंजेस करने की आज तक किसी को जरूरत पड़ी नहीं। ओके, सो बेसिक आइडिया ये, जैसे फ्लो हम लोग डे टू डे लाइफ में अगर कोई चीजें टेस्ट करने की जरूरत पे होती है, तो हम लोग जैसा फ्लो यूज करते हैं, उसी फ्लो के बेसिस पे ये डिजाइन किया गया। So after traceability matrix, when you are done making sure that okay, we have done everything, we have done writing all of the test case for each and every requirement, then only we will start our execution. When we start our execution na, so we'll just do what, we'll just pull the test cases from the same repository। ठीक है, वो टेस्ट केस को पुल करोगे सेम रेपोजिटरी से और तुम टेस्ट करोगे। अजाइल, अगर अजाइल कर रहे हो तो 7 to 8 साइकिल्स पे तुम टेस्ट करोगे एक स्मॉल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर में। वाटरफॉल मॉडल कर रहे हो तो बेसिकली ट्रेडिशनल मॉडल कर रहे हो तो 40 to 60 साइकिल्स लगेंगी इन ऑर्डर टू कंप्लीटली टेस्ट अ होल एप्लीकेशन। ठीक है, ये एवरेज है, ये फिक्स्ड नहीं है। बेसिकली ये डिपेंड करेगा तुम्हारा सॉफ्टवेयर का साइज और स्प्रिंट डिलीवरी का साइज। ठीक है, so what test execution phase handles? Test execution phase handles all the test cases which you have written for the scope of sprint or scope of release. You will pull that test cases, you will fetch that test cases from the execute, try to validate each and everything against that particular test case in the software and make sure everything is working fine. ये टेस्ट केस एग्जीक्यूशन होगा तो देयर माइट बी चांसेस सॉफ्टवेयर इज बिहेविंग प्रॉपर्ली, देयर माइट बी चांसेस सॉफ्टवेयर इज नॉट बिहेविंग प्रॉपर्ली। इफ इट इज नॉट बिहेविंग प्रॉपर्ली, we'll raise defect, right? If we raise defect, we have to do defect tracking। defect tracking ये पूरा प्रोसेस होता है जो हम लोग defect tracking का सेपरेट टॉपिक लिए थे ना पहले। we'll assign the we'll create a defect as soon as we encounter a defect, we'll create a defect, we'll assign it to the developer will fix it and change the status to assign, developer will fix it and assign it back to us and change the status to fix, we have to retest। वो पूरा प्रोसेस याद है सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो वो पूरा स्टेज, वो पूरा प्रोसेस इस पर्टिकुलर स्टेज के अंदर आ जाता है। होल डिफेक्ट ट्रैकिंग कंसिस्ट इज बीइंग कंसीडर्ड अंडर दिस डिफेक्ट ट्रैकिंग स्टेज। ठीक है, तो तुम्हारे टेस्ट एग्जीक्यूशन के बाद इफ यू हैव रेज्ड सम सॉर्ट ऑफ बग्स, यू हैव टू डू डिफेक्ट ट्रैकिंग। वंस आफ्टर दैट वी विल क्रिएट टेस्ट एग्जीक्यूशन रिपोर्ट। व्हाट इज टेस्ट एग्जीक्यूशन रिपोर्ट? टेस्ट एग्जीक्यूशन रिपोर्ट इज जस्ट लाइक द रिपोर्ट कार्ड ऑफ द टेस्ट केसेस। जैसे हम लोग स्कूल में एग्जाम देते थे तो एग्जाम का रिपोर्ट कार्ड मिलता था ना, तो वैसे ही टेस्ट एग्जीक्यूशन इज जस्ट लाइक अ रिपोर्ट कार्ड ऑफ योर एग्जीक्यूशन ऑफ योर टेस्ट केस एग्जीक्यूशन। सो इट विल कंसिस्ट ऑफ मॉड्यूल नेम, जैसे लोन मॉड्यूल था, एक इंश्योरेंस मॉड्यूल था, अमाउंट ट्रांसफर मॉड्यूल था।
Under loan module, you have written in total 420 test cases. Under after on that particular 420 test cases, 120 total you have executed. 300 is yet to execute. ठीक है, 300 तुमने execute नहीं किया, 120 तुमने execute किया. 120 में 96 पास हुए, 24 फेल हुए. 80% will be the pass percentage. when 120 का 96 80% होगा and 120 का 24 20% होगा. ये गलत लिखा है परसेंटेज, बट या यहाँ पर बेसिकली तुम लोग पास परसेंटेज और फेल परसेंटेज लिखते हो. पास परसेंटेज ऑफ द टेस्ट केस एंड फेल परसेंटेज ऑफ द टेस्ट केस. व्हाई यू यूज टू maintain this test execution report is because you have to deliver this particular test execution report to the customer. ठीक है, customer wants this as part of a release note. देखो, रिलीज नोट तो नहीं, डिलीवरेबल. तो डिलीवरेबल जैसे तुम कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर अपडेट आता है तो यू विल गेट अ रिलीज नोट और यू विल गेट अ मैनुअल. कोई भी प्रोडक्ट आता है तो करेक्ट. तो ये मैनुअल जैसे ही होता है बेसिकली तुम्हारा रिलीज नोट, जहाँ पर तुमको पूरे सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल मिलती है. उसमें तुम्हारा एक पॉइंट टेस्ट एग्जीक्यूशन भी होता है. वहां पर तुम ये सारी चीजें मेंशन करते हो. ये सारी चीजें क्यूए साइन ऑफ में भी आती है. जब क्यूए बोलता है ना कि हाँ सॉफ्टवेयर इज रेडी, software is ready for delivery, now I'm done with my testing, so he has to give a QA sign off कि हमने तो कर लिया है और हमारा ये अपडेट है, ये this is the quality of the software, this is all we have done. They provide some sort of document like traceability matrix, test cases, test execution report. ठीक है. So test execution report is one of the document which we used to deliver as part of QA sign off document, release note also, and it's a deliverable to the customer basically. ठीक है. So इसको कैसे create करते हैं? You have to just write a module name, then you have to write total number of test cases which you have written in that particular module, and then total executed from that particular total number of test cases. अब total executed में से कितने पास हुए, कितने फेल हुए, and pass percentage and fail percentage. Got it everyone? Yes, sir. You have to do a bit of maths here, but yeah, it's necessary. Then comes, अब देखो यहाँ पर तुम्हारा तुम्हारा STLC, तुम्हारा कस्टमर के लिए प्रोजेक्ट ही खत्म हो जाता है. when you do the test execution report and you deliver it to the customer, कस्टमर के लिए प्रोजेक्ट खत्म. तुमने सॉफ्टवेयर डिलीवर कर दिया, तुमने डिलीवरेबल डिलीवर कर दिया, कस्टमर के लिए तुम्हारे तुम्हारे तरफ से काम खत्म हो गया. दे विल डू एक्सेप्टेंस टेस्टिंग एंड ऑल. You have delivered the software, right? But if you think of the testing perspective, you have to do one more stage called retrospect meeting, wherein देखो retrospect meeting जो agile में पड़ी थी और ये retrospect meeting जो ये हम पढ़ रहे हैं अभी, ये दोनों में डिफरेंस है. retrospect meeting जो agile में पड़ी थी वो पूरी टीम retrospect meeting थी, जहाँ पर डेवलपमेंट टीम भी थी, टेस्टिंग टीम भी थी, स्क्रम मास्टर भी था, प्रोडक्ट ओनर भी हो सकता है. wherein we discuss कि हम लोगों की कोऑर्डिनेशन में क्या गलती हुई, हम लोगों के प्रोसेसेस में क्या गलती हुई, with the standpoint of software development. पूरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के स्टैंड पॉइंट से बात होती है. बट यहाँ रेट्रोस्पेक्ट मीटिंग में क्या डिस्कस होगा? यहाँ टेस्टिंग स्टैंड पॉइंट से डिस्कस होगा कि टेस्टिंग में हम लोगों ने क्या सही गुड थिंग्स की, क्या बैड थिंग्स की. सिमिलरली रेट्रोस्पेक्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा, गुड थिंग्स पूरे लिखोगे, बैड थिंग्स पूरे लिखोगे उसमें, और फ्यूचर में जब दूसरी स्प्रिंट या दूसरे रिलीज पे काम करोगे तो टेस्टिंग स्टैंड पॉइंट से उन पॉइंट्स को तुम गुड थिंग्स और बैड थिंग्स को ध्यान पे रख के काम करोगे. गॉट इट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Everyone understood, right? So this is all about STLC. इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. काफी सारी चीजें तुमको पहले से ही पता थी, जैसे सिस्टम स्टडी और टेस्ट केसेस, राइटिंग ऑफ टेस्ट केसेस प्रोसेस, टेस्ट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, टेस्ट एग्जीक्यूशन, डिफेक्ट ट्रैकिंग. ये सारी चीजें तुमको पहले से ही पता थी. जो एक दो चीजें तुमको समझने लायक है, ये टेस्ट प्लान जो मैं अभी बताऊंगा, टेस्ट एग्जीक्यूशन रिपोर्ट जो तुमको देखना है, रेट्रोस्पेक्ट मीटिंग भी तुमको पहले से पता थी, बस ये टेस्टिंग स्टैंड पॉइंट से होगी, अब होल टीम स्टैंड पॉइंट से नहीं होगी. ठीक है. तो आई थिंक वी आर क्लियर, वी आर गुड, राइट? यस, Yes. नो, एनीथिंग एल्स? कूल. तो अभी है टेस्ट प्लान. टेस्ट प्लान टेस्ट प्लान का यार मेरे पास ना कोई अच्छा सा पीडीएफ नहीं है. So it's a handwritten notes. Try to cope up with me. Writing is not that bad, so I think we can do it. But इसमें अगर कोई डाउट आता है तो मेरे को प्लीज फ्रीक्वेंटली मेरे को मैसेज करके पूछ लेना, अगर कुछ लगे कि क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा है. ओके. चलो.
सो सबसे पहले टेस्ट प्लान होता क्या है? टेस्ट प्लान एक डॉक्यूमेंट होता है। इट्स अ डॉक्यूमेंट विच डिराइव्स ऑल फ्यूचर टेस्टिंग एक्टिविटी। तो अभी अगर तुम किसी भी प्रोजेक्ट पे टैग होते हो, इवन एज अ फ्रेशर और एज अ experienced person, try to find test plan because it talks like a lot about that particular project specific talk बहुत होता है इस particular test plan। ठीक है, अब देखो एक टेस्ट स्ट्रैटेजी भी होता है, टेस्ट स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट होता है, एक टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट होता है। बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेस्ट स्ट्रैटेजी एंड टेस्ट प्लान। तो टेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होता है? टेस्ट स्ट्रैटेजी इज एट द ऑर्गेनाइजेशन लेवल। ये तुम्हारा टेस्टिंग का अप्रोच बताता है एट द ऑर्गेनाइजेशन लेवल। और टेस्ट प्लान क्या बताता है? इट टॉक्स अबाउट द स्ट्रैटेजी, इट टॉक्स अबाउट द प्लान यू हैव फॉर दैट पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। तो ये जो प्लानिंग एक्टिविटीज होती है वो डिराइव करता है फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। और टेस्ट स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट वो प्लानिंग एक्टिविटी होती है जो तुम पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे करते हो। फॉर एन एग्जांपल, तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन ही तुम क्या करते हो? कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग सपोर्ट नहीं करती। अब हर कोई हर टाइप की टेस्टिंग सपोर्ट नहीं करते, कोई लोग स्पेशलाइज होते हैं कुछ टेस्टिंग में। फॉर एन एग्जांपल, परफॉर्मेंस टेस्टिंग स्पेशलाइज टेस्टिंग है, हो सकता है तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस टेस्टिंग सपोर्ट ही नहीं करती। तो वो टेस्ट स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट पे लिखा होगा कि तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन टेस्ट ये परफॉर्मेंस टेस्टिंग नहीं करती। बट ये जो अगर टेस्ट प्लान में लिखा हुआ है तो हो सकता है कि इस प्रोजेक्ट में तुम्हारा परफॉर्मेंस टेस्टिंग नहीं सपोर्ट कर रहे हो तुम, ड्यू टू फंड और समथिंग। बट ऑन ऑर्गेनाइजेशन लेवल डेफिनेटली तुम करते हो, कि हो सकता है किसी प्रोजेक्ट में परफॉर्मेंस टेस्टिंग हो रही हो। तो दैट्स द मेजर डिफरेंस बिटवीन टेस्ट प्लान एंड टेस्ट स्ट्रैटेजी। Test plan is basically a document which covers the future testing activity for a particular project, and test strategy is for the whole nothing but the whole organization। तुम्हारी पूरी कंपनी का जो टेस्टिंग अप्रोच बताता है वो टेस्ट स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट बताता है। आर वी क्लियर गाइस? कोई क्वेश्चन इस पे? Please explain the definition. टेस्ट स्ट्रैटेजी का ओके, देखो दो होता है, एक होता है टेस्ट प्लान, एक होता है टेस्ट स्ट्रैटेजी। सेकंड पॉइंट, टेस्ट प्लान तुम्हारा प्रोजेक्ट लेवल पे होता है, टेस्ट स्ट्रैटेजी तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन लेवल, कंपनी लेवल पे होता है। तो फॉर एन एग्जांपल, टेस्ट प्लान पे लिखा हुआ है वी डजंट डू कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग। इसका मतलब ये क्या है? इस प्रोजेक्ट में, टेस्ट प्लान पे बोल रहा हूँ ना, इस प्रोजेक्ट पे हो सकता है तुम्हारा कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग तुम नहीं कर रहे हो, बट तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं किसी प्रोजेक्ट में हो सकता है कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग हो रही हो। बट अगर ये सेम पॉइंट टेस्ट स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट में लिखा है वी डजंट सपोर्ट कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग, it means nowhere in your organization in any of the project you are doing the compatibility testing. So test plan describes the future testing activity of a particular project, and test strategy describes the testing approach of a particular company or a particular organization। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही तो तुम प्रोजेक्ट करोगे ना, तुम्हारी कंपनी में रह के ही तुम वो प्रोजेक्ट करोगे जो कंपनी को मिला है। तो अगर तुम्हारी कंपनी ही कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग नहीं सपोर्ट करती है तो उसके किसी प्रोजेक्ट में ये सवाल ही नहीं उठता है कि कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग हो रही है। ठीक है, Yes. so test plan is basically it's a document which covers the future testing activity for a particular project, and test strategy is a document which describes the approach of testing of a particular organization। ठीक है, now we have somewhere around 16 points in test plan। ये सब थ्योरी है, एक के बाद एक समझते हैं। सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव। टेस्ट प्लान का सबसे पहला पॉइंट होता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव डिस्क्राइब करता है व्हाई यू हैव रिटन दिस पर्टिकुलर टेस्ट प्लान। इस टेस्ट प्लान को लिखने का मेन एम क्या है, इसमें क्या कवर है, और तुम क्यों लिखना चाहते हो ये टेस्ट प्लान, दैट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड इन ऑब्जेक्टिव। देन कम स्कोप। स्कोप में फीचर टू बी टेस्टेड और फीचर नॉट टू बी टेस्टेड आते हैं। अभी कभी कभी क्या होता है कि एक कंपनी एक प्रोजेक्ट में काम नहीं करती। फॉर एन एग्जांपल, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है अमेजोन। तो अमेजोन का प्रोजेक्ट सिर्फ एक कंपनी को नहीं होगा, एक टीसीएस को नहीं होगा, एक विप्रो को नहीं होगा बस कि पूरा अमेजोन डेवलप करो। अमेजोन का प्रोजेक्ट होगा मल्टीपल कंपनी के पास।
तो हो सकता है कि टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस तीनों काम कर रही है। टीसीएस कर रहा है लैंडिंग पेज पे और विप्रो कर रहा है पेमेंट ऑप्शंस पे, और इन्फोसिस कर रहा है तुम्हारा कार्ट ऑप्शन पे। तो ये तीन अलग अलग कंपनी हो सकता है कि एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। तो तीनों का फीचर टू बी टेस्टेड एंड फीचर नॉट टू बी टेस्टेड में उनके पर्टिकुलर कंपनी के हिसाब से जो अमेजोन के अंदर का स्कोप है वो लिखा होता है। कि भाई इन्फोसिस है तो इन्फोसिस सिर्फ फीचर टू बी टेस्टेड में कार्ट लिखेगा, और इंटीग्रेशन ऑफ कार्ट एंड पेमेंट पोर्टल, इंटीग्रेशन ऑफ कार्ट एंड बेसिकली योर लैंडिंग स्क्रीन, ये रहेगा। और तुम्हारा फीचर नॉट टू बी टेस्टेड में अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग मेंशन्ड इन फीचर टू बी टेस्टेड, वो सारी चीजें फीचर नॉट टू बी टेस्टेड में आ जाएंगी। So the basic idea is this: whenever multiple teams are working in a particular project, they decide the scope under this particular feature to be tested and feature not to be tested. This is one way of describing scope. Another way of describing scope is that, for an example, you are the only company working in that particular project. तब भी तुम feature to be tested, feature not to be tested लिखते हो. Although you have to test the whole project. With which standpoint you write it? Basically, if you have a shorter interval of time and you have to do the testing on the whole project, you can refer this feature to be tested and feature not to be tested, and you can decide कि कौन कौन से critical feature हैं यहाँ पर. You can refer those and you can try to execute and you can try to test the more critical feature and leave the less critical feature. So इस standpoint से भी कभी कभी तुम्हारा scope लिखा होता है. So you have to interrogate a bit and you have to find कि किस स्टैंड पॉइंट से लिखा हुआ है. ठीक है, देखो यहाँ पर फीचर नॉट टू बी टेस्टेड में हेल्थ, फीडबैक, सपोर्ट, टर्म्स एंड कंडीशन काइंड ऑफ स्टफ लिखा हुआ है. एंड फीचर टू बी टेस्टेड में कंपोज, इनबॉक्स, send mail, all mail, types of each modules लिखा हुआ है. Why? Because they have written in this particular standpoint कि if you have a shorter duration of time and you have to test the whole project, you have to find for the more critical features, and then you have to execute those end-to-end test cases and make sure everything is working fine. These are the less critical features. You actually can leave this in a shorter duration of time. Okay. बट मोर लाइक अगर ये प्रैक्टिकल लाइफ में अगर कभी ऐसा सिचुएशन आता है तो बेसिक अप्रोच यही होता है कि यू ट्राई टू completely test everything. Although you start your testing with the critical feature, but you have to cover the less critical feature also. So you ask for the resources. तुम थोड़े और टेस्टर्स, हाँ बेसिकली क्या करोगे, अपने मैनेजर से बोलोगे कि थोड़े और रिसोर्स दे दो, या तो फिर तुम क्या करोगे, बेसिकली यू विल ट्राई टू एक्सटेंड योरसेल्फ ओनली and try to complete all of your testing. For an example, 7 बजे तुम्हारा working hour खत्म हो जाता है, you try to extend a bit to 9:30 somewhere around that and try to complete the testing. If that is also not possible, basically you can leave the less critical feature, obviously. Then comes approach. Here we describe what is our testing approach. अब देखो हम लोग, अगर मैं तुमको पूछता हूँ कि तुम इस पे कैसे टेस्ट करोगे, from the beginning itself I'm asking you this, like how would you test this, how would you test that, something like that. So you describe at a higher level, one liner to me. So basically you describe a one liner to me, how exactly you will test. Okay, so basic idea is that, for an example, I'm telling you to test the Gmail, so you will describe your testing approach कि तुम कैसे test करोगे. I'll try to log in and I'll try to check with variety of data whether the login page is working fine or not. Then secondary, I'll compose a mail, I'll send it to another one, and I'll check whether it is receiving at the inbox or not of another's mail ID. So basically this is a one-liner description of your testing approach. We call it as a high-level scenario. So describing, writing an approach could be of two types. एक तो high level scenario होता है, एक graph होता है. Okay, so high level scenario is just one liner description कि तुम क्या टेस्ट कर रहे हो. जैसे तो हम लोग टेस्ट केस के हेडिंग में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखते हैं ना, that is the same thing. We just describe in one line that what exactly we're going to test, or not on all that descriptive thing, but one liner to describe your testing approach, how exactly you will test. Okay, then comes flow graphs. Flow graphs is just the same flow you are telling, just in the form of graph. For an example, you are going to test Gmail. So Google offer many products, right? News, browser, and mails. So under that mails, you're gonna test login,
compose, inbox, send item, read mails. Under read mails, you have to test unread, reply all forward, something like that. So you instead of describing in words, you are trying to convert the same thing in terms of basically arrows and graphs, and you have to describe your approach in form of graphical way. Although this approach is not that यूज फ्रिक्वेंटली यूज, ये इजीली अंडरस्टूडेबल है, फिर भी इतना ज्यादा यूज नहीं होता है क्योंकि ये इतना लाइक डिस्क्रिप्टिव नहीं है। ये देख के ना, जिसको पता है फ्लो ग्राफ पढ़ना आता है, he can understand, he or she can understand, but the person who doesn't understand how to read the flow graph, how to understand the flow graph, that this particular approach make like basically may introduce some sort of confusion in the person head, third person head, right? So basically इसको avoid करने के लिए what we used to do, we used to write just high level scenario most of the time, ठीक है, confusion को avoid करने के लिए। Are we clear with till this point, guys? Till third point? Yes, sir. Cool. Then come testing methodology. अब देखो टेस्टिंग मेथोडोलॉजी में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, we try to decide what all types of testing is necessary, what all types of testing is not necessary, ठीक है, what all types of testing we have to do in this particular project, what all types of testing we are not doing at all for this particular project. We are talking about this project, okay? So functionality testing is needed, integration testing, internationalization testing, system testing, smoke testing. This kind of testing you will just write down at one column. Another column you'll just try to uh, either write yes or no, or you can make like check or cross depending upon you that time. So the basic idea is that here we totally try to do what, try to talk about what all types of testing we need to do in order to test this application, and what all types of testing we can avoid. For an example, if you are developing a software for what a particular company which is only working in one particular system, one system in the sense एक restaurant की chain है. For an example, we all heard about Puneri chai, something like that, or MBA chai wala, right? Everyone heard about that? So MBA chai wala, for an example, MBA chai wala wants a software. So he'll ask to the company, and MBA chai wala का टी स्टॉल होगा, एंड टी स्टॉल बेसिकली टी स्टॉल में वो उसके बंदे बैठे होंगे, मैनेजर बैठे होंगे, दे विल जस्ट डू द बिलिंग एंड ऑल, एंड सॉफ्टवेयर विल हैव मल्टीपल फीचर irrespective to with respective to their business. So basic idea is that जब they will do the usage of the software, right? They will definitely use it a particular use it at a particular system, right? उनका एक पर्टिकुलर सिस्टम होगा और उसी सिस्टम में वो एप्लीकेशन यूज होगा, तो यूटिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन विल बी एट अ स्पेसिफिक सिस्टम. So what MBHI wala can do, MBHI wala can talk to their outlet guys, and they MBHI wala can actually provide a specification of the system which needs to be there in their particular outlet to use this particular software. Getting my point? So they can say that you have to use Windows 10 with i7 generation. This is the software specification we have to use, and then we'll deliver you the software. You have to use in this particular specification only, right? So इससे क्या होगा, जो टेस्टिंग में कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग करने का खर्चा होगा वो बच जाएगा MBHI वाले का बेसिकली. वाई? बिकॉज तुमको पता है कि ये पर्टिकुलर सिस्टम एक ही स्पेसिफिकेशन में यूज होने वाला है, ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर एक ही स्पेसिफिकेशन में यूज होने वाला है. तो दे विल जस्ट डायरेक्टली डू व्हाट, they will just directly give the specification and avoid compatibility testing. तो compatibility testing पे यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा, करेक्ट, बाकी सारी चीजों पे टिक आ जाएगा. गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस वे देयर माइट बी चांसेस कि कुछ टेस्टिंग तुम एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे कर रहे हो, कुछ टेस्टिंग तुम एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे नहीं कर रहे हो. So exploratory testing, if you have the requirement, you will not do exploratory testing, obviously, right? So here you describe what all types of testing needs to be done, okay? Sorry. Then comes schedule. इस पे कोई question? Testing methodologies पे कोई question? Yes, no, anything?
Okay. Okay. Then comes schedule. Schedule basically this the same thing which we used to do in our day-to-day life. We used to schedule things, right? कि मैं जिम जाऊंगा सुबह 4 बजे से 5 बजे तक, या फिर मैं सैटरडे को जिम जाऊंगा तो सैटरडे को मैं जाऊंगा 3 बजे से 4 बजे तक. So we used to schedule our task, right? So in the same way, we used to schedule our testing thing in this particular schedule point. The time taken to start and finish any kind of activity, we used to mention this. For an example, in order to set up the testing environment, testing server, this is the schedule. On 16th Jan, they will they will start the setup and they will end the setup at 17th Jan, 12 p.m., something like that. So basically, they will schedule many things like this, and they will schedule and they will also like try to write the timings of it, try to plan their future testing activity, write their own schedules and write their own times there. Okay, so it could be anything, basically any type of task. Okay, I have a doubt on testing methodology. Yeah, go ahead. Bolo bolo. You can turn on your mic actually if you have a doubt. Hello, you're not audible. Am I the only one who is not able to listen to that guy? Hello, guys. No, sir. Sir, he text. I'll text. Okay. Like meanwhile, we can address your doubt. Meanwhile, we can go ahead. You can type. Okay. थर्ड होता है, सिक्स्थ होता है एफर्ट एस्टिमेशन. एफर्ट एस्टिमेशन क्या होता है? Basically, here you estimate something, right? Like the name suggests, effort estimation. Here you estimate your effort wherever you have to put. In terms of human effort, you estimate. In terms of time, also you estimate. It's just like this section covers the whole every task effort. Whatever you are trying to do in this particular project, that particular effort you try to capture here. How many engineer will be needed in order to complete the whole project? How many hours will be needed in order to complete each and every task? For an example, setting up an environment, how many hours of time it will take, and manual testing on each page, the test cycle duration. This is all comes under effort estimation. This is where you actually do what, try to estimate how much time you have to invest, how much people you have to invest, in terms of days also, and in terms of number of humans also. You try to estimate each and every task, whatever could be estimated, you try to estimate it. How many total number of hours are needed in order to completely test the whole project, or to completely develop a whole project, you try to do those effort estimation. Okay, then comes these 3 points: assumption, risk, and backup plan. Mitigation, backup, contingency, whatever you call it as, it's just like a backup plan. So these three things comes hand in hand. Whenever you are starting a project, you will assume something, right? You will do some sort of assumption. For an example, you used to do in your daily life also, right? For an example, you have to go to station to pick your relatives. You will assume that your vehicle will run till the station and it will come back, it will not break down in between, right? So basic idea is that whenever you try to complete some sort of basically a work, a task, you will assume something, you will assume some sort of thing, right? So similarly, when it comes to like this, I think, sir, how can I choose testing methodology? It's defined, it it's defines the test scenarios. It does not depend upon the test scenario, it depends upon the project.
basically if you are trying to completely test a particular project na, so what is the need of that particular project, that you have to analyze. अगर वो बहुत सारे multiple environment में use होगा, so you have to do the nothing but your compatibility testing. If you don't have the requirement, you have to do the exploratory testing. If client is not taking care of the acceptance, you have to do acceptance testing. So you have to analyze the work in basically your project discovery duration only, to a project study duration only. You have to analyze your work and then put it under the testing methodology thing in order to completely describe what all thing we have to do, what all thing we don't have to do, what all types of testing we have to do, what all types we don't types of testing we not at all have to touch. Are we clear? Yes, sir. Did I answer your question? Cool. Now we were talking about assumption, risk, and mitigation or backup plan. So I have told you that देखो जैसे if you are doing any kind of work, similarly if you are doing any kind of testing or doing any kind of testing on a particular project, you have to assume certain things. For an example, no test engineer will leave the job in between this particular project, but it doesn't happen, right? Some people might get a better offer, they might switch in between a project also, you can't stop them basically, right? So this is a assumption कि कोई भी job छोड़ के नहीं जाएगा. Whenever you assume something, it comes with a risk. What if this happen, right? Basically you assume something like no test engineer will leave the job. The risk with this assumption is basically what if one test engineer will leave the job. This is the risk. So with all sort of assumption comes a risk. Whenever we consider assumption, we should also consider risk, right? What if one or two test engineer leave the job? So basically if this is the risk, what is your backup plan? Also, like these three things comes hand in hand. You have to assume something, then from that assumption you have to derive a risk. From that risk you have to derive what? You have to derive a backup plan for that particular risk basically. Okay, if you are basically doing what, raising some sort of risk, what is your backup plan for that, to overcome that particular risk? For an example, it is saying that one of the test engineer is leaving the job. What if one of the test engineers actually leaves the job? What is your backup plan? My backup plan is to, for every feature you have to assign a primary owner and secondary owner. For an example, login is a functionality, I've assigned it to Ashish, I will also assign it to Naveen. Ashish will be the primary owner, Naveen will be the secondary owner. So if Ashish leaves the job, Naveen will continue testing on that particular module and will not stuck there. Will be not stuck there until the new person comes. Right? Everyone got that? Yes. Yes, sir. Cool. So these three things comes hand in hand. Then comes entry and exit criteria. So entry and exit, it's just like you have entry and exit door to every shop or everything, right? So it's not shop here, it's a testing phase. If you have to start your testing and ends your testing, what should be your entry and exit criteria? If you want to start your testing beforehand, what is the criteria you need to meet? And if you have to stop your testing, basically beforehand, what is the criteria you need to met in order to exit the testing phase itself? So basically, in before starting your testing, what all things you need to do? Why you need to make sure it is done. Basically test cases should be written, test cases should be reviewed and basically approved. White box testing should be done. Basically good percentage of white box test cases should be passed. It should not be like build quality is very bad, something like that. Testing environment should be ready, test data should be ready. These all comes under basically entry criteria, because without fulfilling these criteria, you will eventually get blocked in your testing, right? So basically these are the entry criteria. Similarly comes under exit criteria, there are certain things like all the acceptance test, whatever comes under acceptance testing can be considered as a exit criteria. Kaise? Acceptance testing में basically the number of test cases which needs to be passed, which is given by the customer. If it is not being passed,
you can't stop your testing. Why? Because even though you stop your testing, you can't release the software, right? So that comes under test exit criteria or exit criteria. Now basically there will be few more points like no more blocker bug should be there, no more critical bug should be there, end-to-end test cases should be passed, testing should be done in a test environment which is similar to production environment. This all things needs to be done in order to completely stop your testing, right? This is a good things which you have to fulfill, and then you are stopping for a good reason, that you have completed everything and you are stopping your testing because of this. Okay, got it everyone? Yes, no, anything? Yes, sir. Cool. Then comes the 11th point. It's test stop criteria. Test stop criteria क्या होता है? देखो, it's a different, there is a difference between exit criteria and stop criteria. Exit criteria talks about only the good things due to which, or only those criteria which you need to fulfill before you actually want to stop your testing, right? But test stop criteria consist both good things and bad things. Good things are those things which happens and you are now stopping your testing. Bad things are those things because of that you have to stop your testing. Because of that means what? You are not willingly doing stopping your testing, but because of some reason you have to stop your testing. So good things में क्या आएगा? When all the features are ready which is being requested by the customer, end-to-end business scenario is working fine, when there is no blocker bug, no critical bug, when the software meets the acceptance criteria, you get a good quality software, you got a sign off from customer and product owner, right? So these are the good things. When you are whatever amount of work you need to spend, that is done, you are done with all the type of testing, you are basically good to stop your testing. This is good activities because of which you have to stop your testing. And the similarly comes on bad activities. Bad activities consists points like, basically we have to stop your testing whenever the software quality is very bad. When you do the smoke testing, you got to know that software quality is really bad, the developer needs to work more on the software, then you will stop your testing. In between of any test cycle also, in between your sprint also, whenever you feel that the quality of the software is very low and you can't test this, you can't conduct testing every corner of the software, wherever you touch you got the bug. Basically in that scenario you will reject that build, you will try to work on test scenarios more and test cases more, other activities more, and stop your testing, saying that the quality of the software is very bad. Then comes, we stop our testing whenever there is too many blocker bugs and critical bugs. As I said, if there is a lot of bugs, you have to stop your testing. We stop our testing whenever the deadline is met. Whenever the deadline itself is met, you have to stop your testing. Okay, whenever your deadline is met, basically your testing is not done but deadline is met. Whenever testing budget is basically crossed, this is basically very rare to have, because I don't think so anytime it happens that like testing budget is over and you can't invest more time on testing. So but if it happens, you have to stop your testing. So these are the test stop criteria due to bad activities. Then comes test automation. Test automation covers all the things which is related to automation. Automation से related हर point, हर confusion का solution तुमको test automation के अंदर मिल जाएगा. So here basically we discuss what all types, what all feature needs to be automated, what all feature need not to be automated, on which particular stage it needs to be automated, what all number of engineer is involved in the automation, what all processes you need to follow in terms of doing the automation, and also basically what all tools we are using in order to do the automation, framework and tools we are doing in order to do the automation. So automation related anything, you can find it here and you can mention it here while creating the test plan. Okay, got it? Yes, sir. Cool. Then comes your familiar defect tracking. तो defect tracking में discuss करते हैं हम लोग कौन सा defect tracking tool use करना है. What exactly defect tracking tool we have to use? What is the process we are following in order to do the defect tracking? And also what are the severity level we have to take when you are describing the severity of the defect?
or what are the priority level we have to take in, yeah, whenever we are describing the priority of the defect. And basically you can also they can also mention the report format also, defect report format also, if they want it here, or else they can usually mention it under template point, which is the 16th point. Okay, okay. So this is all about defect tracking. Whatever defect tracking and defect related stuff which you want to declare, you can declare it under defect tracking point. Then comes test environment. Now in the companies we will have multiple environment, multiple servers basically. So this describe which all feature can be tested in what all environment, and basically what environment you need to use in order to test your in order to do the testing. And also it describes how to install the build in the testing environment, but it is not necessary for you as it is being deployed by the DevOps most of the time. But for the general and understanding purpose, they have written it here most of the time. Okay, so this describes basically your testing environment. What is the testing environment? Scheduling of the testing environment will be mentioned in schedule, but the reference name will be taken from here. This particular name environment will be scheduled from this date to this date, something like that. They can also talk about acceptance environment under this testing environment if your company only do the acceptance testing, responsible for the acceptance testing. So they will describe it here. Okay. Then comes 15th point, which is deliverable. Deliverable are those documents which you have to deliver to the customer as a proof of your testing, or as a proof of quality of your testing basically. So here you basically deliver the test plan, all the test cases, release note, all the graphs and matrices which you have made. It comes with, like, for an example, we have done your traceability matrix, we have done test execution report. These are the matrices, right? We have a graph like a burn down chart. Everything will be delivered, all the types of document will be delivered, what all graphs, what all matrices you have made, and will be delivered to the customer. And basically your test execution report, for they can just refer the report and they can just understand the quality of the software by referring this particular report. Okay, so after that, the last point is basically template 16 point, and it consider all the document templates whichever you have to use in this particular project. So what is the standard template for that particular project, for that document? You will find it under 16 point templates. Any questions in this, guys? टेम्पलेट और क्या Okay, so template क्या होता है? Usually template क्या होता है? If you go to Google and if you search for template is basically a format of document. So template एक पॉइंट होगा यहाँ, जैसे 15 पॉइंट है वैसे 16 पॉइंट एक पॉइंट होगा टेम्पलेट. तो टेम्पलेट के अंदर सारी रिपोर्ट्स और सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी तुम पूरे प्रोजेक्ट में बनाने वाले हो, फॉर एन एग्जांपल तुम्हारा टेस्ट प्लान या फिर टेस्ट केस या रिलीज नोट हो गया, या फिर तुम्हारा टेस्ट एग्जीक्यूशन रिपोर्ट हो गया, या फिर डिफेक्ट रिपोर्ट हो गया, तो ये जो भी डॉक्यूमेंट तुम बोल रहे हो, इन सारे का टेम्पलेट होगा, इन सारे का फॉर्मेट होगा अंडर टेम्पलेट फॉर्म point. Okay, so if you are confused what is the format you need to utilize, you can go to template and you can basically find that format. For an example, defect report बनाना है, defect report का format कौन सा है इस project में नहीं पता है, go to your test plan, go to template thing and try to find the defect report template. Okay, Yes, sir. cool. So this is all about your manual testing. In end user, there isn't any issue on software application. How can we solve the issue in the end user side? Okay, so if it is under production, there could go two ways you can solve this issue, right? First way, your software is in the testing phase, so it will be a regular sort of flow which you used to follow in order to get the bug fixed. You will test your end user software, you will encounter that software and issue, and you will log a defect, they will fix it, and they will basically provide a newer build to you. You have to download and install in your particular devices, and then you have to do what you have to basically sorry you have to do what you have to basically retest it, and if it is fixed,
You have to close that defect. So this is how you basically test and get fixed your bugs in the end user's client side application. Secondary, if it is a production issue, you have already delivered it to the customer and customer finds a issue in the live application from the client side, client is reporting that. So in that time, basically they will do the fix. They will do something called as hot fix. Hot fix is basically a urgent fix in the production environment also only, so that the user will be like no longer facing that issue in the production environment. So what, as soon as we get a report that you are having a defect in the production environment, irrespective to client side or the server side, they will immediately take an action. They will try to do the fix in the development environment, deploy the changes to you. You have to retest it in your testing environment, and then once you give the sign of yeah it is fixed, then they will do what, they will try to deploy the changes. Once they deploy the changes, the customer will get an update. The client side application user will get an update in their mobile app. They will update it. That will be basically patch. They will update their mobile application, the client side application. Once it is done, they will see that fix is deployed, that particular bug will be fixed. So basically this process hot fix basically only happens when the like people are facing issues in the production environment. So this is how you fix in two ways, if it is in the testing phase or in the production phase. Depending upon that, the process will be followed. Okay, are we clear? Did I answer your question? Virana, did I answer your question or should I repeat? Okay, cool. Anything else for me, guys? These are the white box testing processes. This is a bonus point for you if you want to go through it. Although it is not needed as part of manual testing, this is something which developer used to do. So basically, you can basically, if you want to, you can go through it. It is there in the same PDF. If you find any difficulty, you can contact me. I will basically tell you, do this particular part white box testing if you want to do after core Java classes get completed. Okay, so if you want to do this, try to go through this after your core Java classes. Okay. Okay, manual testing is over. Anything else for me, guys? Any questions? Anyone? Ashish, Shubhlakshmi, Virana. They Sir, are when we will have answering. our doubt session. Whenever you guys are ready, we can have a doubt session. So tell me that internally connect with each other and try to analyze कि कितने लोगों को doubt है, क्या doubt है. Then when once you are done with revision and have your consolidated doubts, then we can have the classes. I was planning to do on Tuesday, but I feel like a lot of people are not going through the lectures that frequently. They are yet to revise everything. Then again they will get doubts, right? So let's take it combinedly. And if you are in hurry, for an example, you have completed your revision, you have some sort of doubt, ping me in WhatsApp. I'll send you explain you over voice notes or anything, but I'll try to clarify your doubt. Okay, चलेगा? Yes, no, anything, guys? Yes, sir. Yes, sir. Cool, चलो ठीक है, बताना मेरे को फिर जैसा भी हो. I will try to see. Okay. Okay then, guys. Best of luck for your future. Try to work hard. Get your concept really rock solid, and then you'll be good enough to give the interview and get a good salary. Okay.
Sir, you won't take any further classes? No, bro, I'll not take basically. You'll have your automation class soon, I guess. You'll have to complete your core Java first, and then automation will be there. Okay. Sir, Okay, in sir. automation testing, you won't take? No, I'm not the right person to teach automation testing actually. I usually take manual testing. Why? Because I enjoy a lot teaching manual testing. I am a working professional in MNC, but teaching is less just like a hobby for me. I love to see new faces. I love to interact with new people. So teaching is just like that for me. I don't do it for like professional sake. So not professional sake, I would say I'm a very professional teacher because I started as a teacher, right? So basically, when I joined IT, that time I decided I will continue this thing. But it's not like I want to teach a lot of technical terms and all. Manual testing is just like a base and root. That's why I want to help people in, like have it rock solid. Okay, so I'll not be there for you in automation classes, but yeah, this till here today. Today is my last day, guys, with you. I Sir, guess manual this is it. testing का mock test. Mock test, you have to talk to Sidhu for that in your group. When will be the mock test and all? But just be prepared beforehand. Okay, Okay, prepare sir. करो. कोई भी doubt आता है तो पूछो. Sir, is coding required for manual testing? Not at all. 0% coding is required for becoming a manual tester. तुम्हारा manual testing खत्म हो गया है. You can give the interview of manual testing if you are a fresher. And not at all core Java also. Manual testing is free of coding. Yes. Chalo. Any other thing, guys, for me before we wrap it up? No? Then we can wrap it up. Thank you, guys. Thank you for your time and best of luck for your future. Chalo, ठीक है. Bye. Bye, everyone. Sir, if any doubt, we can contact you. Surely. That's what, like, even though I'm not a manual testing teacher trainer for you anymore. It's completed. But anytime if you feel like in your career opportunities also, like if you see that I'm facing some issue in deciding things also, that then also you can call me. I'll help you out. Okay. Chalo. Yes, sir. Okay. Bye bye.